So, dear friends, we are starting today a series of master class, and the first topic will be Bindi stroke or the paralysis. In the Chinese term, the Bindi stroke means apoplexy. Person is becoming unconscious suddenly. व्यक्ति एकदम से बेहोश हो गया, गिर गया, उसके सेंसेशन चले गए, लॉस हो गए और उसकी न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट हो गया. In the modern medicine, we are telling it cerebrovascular accident, CBA, cerebrovascular accident. In the acupuncture, the meaning of apoplexy is fang. Fang means bind. Fang का अर्थ है bind. Right. The apoplexy is caused by internal bind. This is the brain. Inside the brain, there is a blood clot. हमारे ब्रेन के अंदर एक ब्लड का क्लॉट है, responsible for the paralytic attack or the hemiplegia. So we can see this person is falling on the floor because of the wind stroke or because of the apoplexy. Now, in the Western medicine, we are telling it CBA. The meaning of apoplexy, the meaning of wind stroke is CBA means cerebrovascular accident, means in your cerebrum, मतलब आपके ब्रेन में. The vascular means the blood supply. Accident means got impaired. Got impaired. हमारे ब्रेन में, उस व्यक्ति के ब्रेन में ब्लड वेसल्स की सप्लाई इंपेयर्ड हो गई, जिसे कहते हैं सीबीए और द सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट. द कारण है 1, 2, 3 and 4. So quickly we will see all the 4 causes. Let's start from the cause number 1, responsible for the paralysis, responsible for the wind stroke, and responsible for the cerebrovascular accident. पहला कारण cerebral hemorrhage. पहला कारण क्या है? सेरेब्रल हैमरेज. तो हम 4 कारणों की बात करेंगे जो पैरालिसिस के लिए जिम्मेदार हैं, जो विंड स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार हैं, जो इंटरनल विंड के लिए जिम्मेदार हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज 4 थिंग्स. नंबर 1, सेरेब्रल हैमरेज. So we can see what is the hemorrhage. There are lots of blood supply in the brain. हमारे ब्रेन में बहुत सारी ब्लड वेसल्स जाती हैं. We can see this is the external carotid artery going in the brain, common carotid artery going in the brain, internal carotid artery going in the brain. There are many arteries going in the brain. Then we can see the branches and the sub branches going here and there in the brain. And suddenly a rupture of any blood vessels and bleeding, that is called hemorrhage. किसी blood vessels का rupture हो जाना. We can see in this image, the suddenly one blood vessels is getting ruptured and causing the hemorrhage. That is called, this is the cause number 1 for CBA, cerebrovascular accident. If you see the brain, if you see the scalp, हमारे ब्रेन में सबसे बाहर तो होता है बोन्स, बोनी पार्ट. We have frontal bone, parietal bone, occipital bone. Then we are having membranes. फिर हमारी membrane होती है ब्रेन में, right? So outer part is the bone. Then we are having 3 membranes. What is the name of 3 membranes? ये 3 membrane होती हैं हमारे ब्रेन में. They are called meninges. Then we are having brain inside. फिर हमारा ब्रेन है, right? So these 3 membrane are called DAP. हमारे ब्रेन की कवरिंग को हम DAP कहते हैं. The meaning of D is durameter, which is the outermost covering, which is outermost covering. Then second covering is arachnoid matter.
That is the second covering. That is called arachnoid matter, D and A. Then the third covering is P, pia matter. So this is the third covering. That is the pia matter. So the dura matter, arachnoid matter, and the pia matter, there are three covering on the brain. When the person is having bleeding, most of the time this bleeding is below the arachnoid here. Here. So this is called subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage. So you might be aware with the covering of the brain, right? DAP. Now in the reports, in the medical reports of the patient, you will see this finding that subarachnoid hemorrhage. Then look at the outermost, it's written skull. Skull means outermost covering. Then we have dura matter. Then we have arachnoid matter. Then we have pia matter. And finally we have brain. So outermost is skull. Then the dura matter, arachnoid matter, and the pia matter. And finally we have skull. Right? We can understand in this image also, it's very clear. The outermost covering of the brain is a skull. हमारी खोपड़ी ये skull है, bony part is skull. Then dura matter, we can see this arachnoid matter, and this is the pia matter, right? Pia matter. So in this way, what is the meaning of subarachnoid space? Subarachnoid space means the space below the arachnoid. We can see this entire space which is below the arachnoid, that is called subarachnoid space. Okay. ये subarachnoid space कहलाता है. ये देखिए the below the area below the arachnoid matter, that is called subarachnoid space. So when in the reports, if it is mentioned subarachnoid hemorrhage, then we should understand what the report is telling about. So this is the first cause for CBA or the cerebrovascular accident. Now let's move to the cause number 2 for CBA. The cause number 2 is cerebral thrombosis. Thrombosis. The meaning of thrombosis, suppose this is the canal and there is some blockage here. एक नाली में ब्लॉकेज जम गया, कचरा जम गया. That is called thrombosis. Because we know there might be many causes. Because blood is flowing continuously. In the blood we have RBC, WBC, platelet. Inside the blood vessels we have sometimes deposition of the cholesterol. Or something is stuck. Something is depositing. Let's see in this image. This is the image of thrombosis. Like we can see, this is the blood vessels. Inside the blood vessels, there is a deposition of this unwanted material. ये किसी unwanted material का deposition हो रहा है. We can see. Here, this is the deposition. This is the deposition. We can see the yellow color deposition. It might be cholesterol. It might be something else. Right? So we can see the blood vessels is becoming narrow. हमारी blood vessels पतली हो रही है. Pipeline पतली हो रही है. Then blood will not able to flow properly. So this is called thrombosis. Right? Thrombosis. This is a second condition. And it's a very condition because thrombosis might happen not only in the brain, कहीं भी हो सकता है thrombosis. हमारे पैरों में हो सकता है, पैरों की blood vessels में हो सकता है.
है ना, कई बार पैरों की ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बोसिस हो जाता है. सो वी कैन सी सम इमेजेस हियर, some images of the thrombosis. Let's see now. The meaning of thrombosis, something is stuck in the blood vessels. हमारी ब्लड वेसल्स पतली हो गई, के बीच में कुछ फंस गया, ब्लड को जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है. लेट्स सी इन दिस इमेज, we can see the first blood vessels is very good blood vessel. Now as we proceed in the second, third and fourth blood vessels, we can see how these blood vessels are having the deposition of the thrombus. ये थ्रोम्बस का डिपोजिशन है. आपने सुनी होगी एक डिसीज, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. डीप वेन थ्रोम्बोसिस और डीवीटी. क्या होता है डीवीटी? इन द डीवीटी व्हाट हैपन, देयर इज ए डिपोजिशन ऑफ द अनवांटेड मटेरियल इनसाइड द ब्लड वेसल्स. इन द लेग, हमारे पैरों में डिपोजिशन हो जाता है इन अनवांटेड चीजों का. तो ये सेकंड कॉज है सीबीए का, पैरालिसिस. तो जब भी हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं, हमें पता होना चाहिए आखिरकार क्या कारण रहा, कि आखिरकार कौन सा कारण रहा, किस कारण से उसे पैरालिसिस हुआ. द थर्ड कॉज, लेट्स प्रोसीड अहेड. अब हम तीसरे कॉज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. द कॉज नंबर 3 इज सेरिब्रल इम्बोलिज्म. वेरी डेंजरस. ये है सेरिब्रल इम्बोलिज्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्बोलिज्म? इम्बोलिज्म का मतलब वो होता है कि बहता हुआ पत्थर, बहता हुआ टुकड़ा. आपने सुना होगा. ये बताइए कि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं तो हवा को क्यों निकालते हैं? बताइए. When the doctor putting the injection, then first they are removing the air. Why? Otherwise, the bubble of air will travel, like a bubble of air will travel. That is called embolism. Embolus. उसी को कहते हैं embolus. यानी जो हवा का जो बुलबुला है हवा का, वही पूरे ब्लड में घूमेगा, कहीं जाके फंस जाएगा, हार्ट में फंस जाएगा, ब्रेन में फंस जाएगा और पैरालिसिस दे देगा. दैट इज कॉल्ड इम्बोलस. एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर रिमूविंग द एयर बिफोर दे पुट द इंजेक्शन, राइट. नाउ इवन इफ डॉक्टर आर पुटिंग द ड्रिप, बिफोर द ड्रिप फिनिश दे क्लोज द ड्रिप, राइट. जब ड्रिप लगाते हैं तो ड्रिप खत्म होने के पहले बंद करते हैं कि नहीं करते, कि हवा को जाने देते हैं बाद में? हवा जाने देते हैं क्या? नहीं जाने देते. If the air will enter in the bloodstream, it will travel like a bubble. That is called embolus, and it will travel anywhere. So embolus might be made by many things. Embolus किसी भी चीज का बना हो सकता है, हवा का बना हो सकता है, यह है ब्लड वेसल्स का बना हो सकता है, ये किसी ब्लड सेल्स का हो सकता है. यानी टुकड़ा, बहता हुआ टुकड़ा, जैसे बहता हुआ पत्थर कहीं अटक जाए. So let's see in this image, the embolus means this this something is floating inside the blood vessels. It might be the part of clots. जैसे एक व्यक्ति को, जैसे ये हमारा थ्रोम्बोसिस की अभी हमने बात की थी, एक व्यक्ति को ब्लॉकेज हुआ कोलेस्ट्रॉल का, एक व्यक्ति को, द पर्सन इज सफरिंग विद ब्लॉकेज. लेट्स सी हियर, maybe anywhere, the formation of the thrombus, the formation of the thrombus anywhere in the body, maybe in the leg, maybe anywhere. Now suppose this is the some part of the this blocked thrombus is coming out. इसका एक टुकड़ा टूट के निकल गया और बहते हुए पत्थर की तरह, बहते हुए कागज की नाव की तरह इसने बहना चालू कर दिया पूरे ब्लड में.
It is floating like a boat inside the bloodstream. So that particle, that embolus might be made by any particle of platelet, any particle of air particle, ये कुछ भी हो सकता है, any particle of this थ्रोम्बस, यानी किसी भी चीज का टुकड़ा जब बहता है और बहकर कहीं अटक जाता है तो ये भी पैरालिसिस पैदा कर सकता है. वी कैन सी in the brain we are having very thin blood vessels, very thin blood vessels like the hair. हमारे बालों की तरह पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं. अब आप खुद सोचिए, इसमें एक फंस गया कोई बुलबुला तो क्या होगा? द पर्सन विल बी सफरिंग विद पैरालिसिस. So it's a very dangerous condition. So this is the third cause for CBA or the cerebrovascular accident, right? Embolus, बहता हुआ टुकड़ा, the floating stone or floating air bubble. This is the embolus, right? And previously we have seen thrombus. So we can see there is a blockage in the blood vessels. And previously we have seen bleeding, that is hemorrhage. So we have seen three causes. Hemorrhage, the meaning of hemorrhage, artery is bursting and there is a bleeding in the brain tissue, right? Thrombosis means happening inside the brain. There is a blockage in the blood vessels, हमारी blood vessels के अंदर होने वाला blockage. Embolus means this is also the cause for stroke. The embolus means some particle is breaking off and floating. कोई पार्टिकल थोड़ा सा टूट गया और फिर फ्लोट कर रहा है और कहीं भी जाके अटक रहा है. So the three cause, and the cause number 4 is spasm of cerebral vessels. हमारे ब्रेन की वेसल्स एकदम से सिकुड़ गई, स्पाज्म हो गई. जैसे हम ठंड में कैसे सिकुड़ जाते हैं, ऐसे हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ जाती हैं. इट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस कॉज. दैट्स व्हाई वी कैन सी समटाइम पर्सन इज गेटिंग पैरालिसिस जस्ट बाय टेकिंग द कोल्ड वाटर बाथ. ठंडे पानी से नहाया, उसकी ब्लड वेसल सिकुड़ गई. देयर इज अ सेरेब्रल वेसल स्पाज्म एंड पर्सन गॉट पैरालिटिक अटैक. डेफिनेटली इट्स लेस सीवियर, ये कम सीवियर होता है और रिकवरी फास्ट होती है इसमें. तो ब्लड वेसल सिकुड़ जाना, इट इज कॉल्ड वैसोस्पाज्म. दिस इज द फोर्थ कॉज we can consider here. So what is the vasospasm? The meaning of vaso means blood vessels, and the meaning of spasm means suddenly it's contracting. So we can see the first one, normal blood flow, and the second one we can see here, there is a spasm in the blood vessels, so reduce blood flow, right? Blood flow का कम हो जाना. कहीं भी हो सकता है. सडनली वी कैन सी द ब्लड वैसोस्पाज्म इन द हार्ट. वी कैन सी जब किसी को हार्ट अटैक आता है, सडनली हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ ब्लड सप्लाई इज नॉट प्रॉपर इन द कोरोनरी आर्टरी. सडनली ब्रेन स्ट्रोक और एनीवेयर इन द फिंगर, इन द टोज. हमारे हाथ पैरों में ब्लड वेसल सिकुड़ सकती है, ब्रेन की ब्लड वेसल सिकुड़ सकती है, हार्ट की ब्लड वेसल सिकुड़ सकती है, कहीं भी सिकुड़ सकती है. The vasospasm might be anywhere. So whenever we are talking about the CBA or the brain stroke, always remember causes. Number 1, bleeding. Number 2, blockage. Number 3, floating stone or the floating air bubble. And number 4, spasm of the vessels. They are the 4 causes we can consider as a Western medical conditions for CBA. Now let's see here. So when we talk about the brain stroke, we have to understand what are the causes of the brain stroke. इसके कारण क्या होते हैं? Why the person is suffering with the brain stroke? As per
TCM। पहले तो हमें कारण का पता होना चाहिए, व्हाट आर द कॉज, देन ओनली वी एबल टू ट्रीट द पेशेंट, तभी हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। विदाउट द कॉज इट्स डिफिकल्ट टू ट्रीट द पेशेंट। सेकेंड, पैथोलॉजी। आखिर हुआ क्या, किसने क्या कर दिया, किससे क्या हो गया। द पर्सन इज नॉट स्लीपिंग, दिस इज द कॉज। देन व्हाट इज हैपनिंग, मे बी इन डेफिशिएंसी, दिस इज द पैथोलॉजी। In this way, we are doing the identification of the pattern, then we are planning the treatment। फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, फिर हम ये प्लान करते हैं कि भैया कितना टाइम लगेगा, कितना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रीटमेंट, व्हाट इज द प्रोग्नोसिस, की कितना फायदा मिलेगा। कि सब पेशेंट को पूरा फायदा नहीं मिलता। आपने कहा कि भैया हमारे पास पेशेंट है, उसे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कितना फायदा मिलेगा, पूरा ठीक होगा कि नहीं होगा, कितने परसेंट ठीक होगा। Some patient is getting 100% recovery, but some other patient is getting certain amount of the recovery. So we have to find out our patient is getting how much recovery, that is called prognosis. Prognosis, right? Fine. कई बार प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है, कई बार प्रोग्नोसिस बहुत खराब होती है, बिग यानी अच्छी नहीं होती। सो नाउ वी विल सी द टंग आल्सो। हम पेशेंट की जीभ देखेंगे, पेशेंट को बोलेंगे जीभ निकालो, अब पेशेंट आएगा ऐसे करेगा। मैं तो थोड़ा सा एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन पेशेंट सही करेगा। उसकी टंग वाइब्रेटिंग, मूविंग टंग। सो इफ द टंग इज मूविंग, इट मीन्स देयर माइट बी चांसेस ऑफ पैरालिसिस और द पर्सन इज ऑलरेडी गॉट पैरालिटिक अटैक। अगर आप किसी की जीभ देखें, मेरे पास एक पेशेंट आया, मैंने कहा जीभ निकालो, ऐसे कर रहा। आई टोल्ड ओ देयर इज चांसेस ऑफ बिंड स्ट्रोक, डू समथिंग, रिमूव द बिंड इमीडिएटली। एक्चुअली बिंड इज डूइंग थ्री थिंग्स। नंबर वन, मूविंग टंग। नंबर टू, डेविएटेड टंग। जीभ निकालो, जीभ निकालो बाहर, बाहर निकालो जीभ। कैन यू सी दिस? टंग इज नॉट कमिंग आउट स्ट्रेट, जीभ सीधी नहीं निकलती। मे बी आप तो देखते होंगे कितने सारे पेशेंट आते हैं आपके पास और कितनी टेढ़ी टंग निकालते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जीभ बहुत ही ज्यादा टेढ़ी निकले। देखो थोड़ी, अब आप मैं आपको जीभ दिखा रहा हूँ, आपको बताना है कि टेढ़ी है कि नहीं। चलिए, टेल मी। बताइए, ये जीभ टेढ़ी है कि नहीं, डेविएटेड है कि नहीं, डेविएटेड। whether we will tell this tongue deviated or not। यस और, तो आप ऐसी टंग देके क्या बोलेंगे, भैया तुमको पैरालिसिस आने वाला है, सब बोलोगे कि भाई तेरे को अभी विंड स्ट्रोक आने वाला है, हेमरेज होने वाला है। नो, वी कांट टेल, बिकॉज wind might create something different also, wind might create many other things also, right? But deviated tongue, moving tongue, and the stiff tongue, stiff, जीभ एकदम कड़क हो जाएगी, स्टिफ, जीभ की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे कि आपने देखना है कि एक डंडी है एकदम अकड़ी हुई, डंडी होती है ना अकड़ी हुई, और एक डंडी होती है एकदम फ्लेक्सिबल। जैसे आप सुबह सुबह नीम की एक पतली वाली डंडी तोड़ के लाओ, कैसी फ्लेक्सिबल होती है। सम स्टिक इज वेरी फ्लेक्सिबल, some stick is very rough। So it's, if the vata is high, it is creating roughness and hardness। जैसे भी वाता वाले लोग भी थोड़े रफ होते हैं, वाता वाले लोग भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आपको पता होगा, एकदम सीधा खरा खरा बोल देते हैं, सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे कैसा भी लगे, दे आर द रफ पीपल, द पर्सन वाता पर्सनैलिटी। So even the wind is high, the tongue will be rough, tongue will be stiff, right? Tongue will be stiff। So there are three findings
वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें तीन चीजों को समझना होगा। when the person is suffering, when there is a excessive build, there will be stiffness in the tongue, moving tongue, and deviate tongue. It's so there is a bind is excessive. अब देखिए, आप कभी कभी पूछते हैं ग्रुप में कि हम पैरालिसिस का प्रोटोकॉल बताओ, पूछते हैं ना, या और भी कोई लोग पूछते हैं। बिफोर मेकिंग द प्रोटोकॉल फॉर द पैरालिसिस, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द बिंड इज हाई, flame is high, fire is high, or the stasis is there. Then only you will able to make the protocol, because one protocol cannot work for every patient. एक प्रोटोकॉल सब पे नहीं लगेगा भाई, कैसे लग जाएगा? एक को ब्लड स्टेसिस है, उसे आप बिंड का प्रोटोकॉल लगाए जा रहे हो, नहीं लग सकता। ओके, सो मेनी अदर पर्सन आर पुटिंग देयर प्रोटोकॉल्स बिकॉज दे हैव डायग्नोस्ड इन देयर पेशेंट्स दैट पैटर्न। तो पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी जीभ, अगर हमारे शरीर में फ्लेम बढ़ेगा, फ्लेम यानी कफ बढ़ेगा, द पर्सन इज हैविंग लॉट्स ऑफ कफा, तो क्या होगा? आप जानते हैं, जब हमारे शरीर में कफ बढ़ता है तो जीभ कैसी हो जाएगी बताइए? टंग विल बी वेरी स्टिकी, हमारी टंग एकदम स्टिकी हो जाएगी, बिकॉज द नेचर ऑफ फ्लेम इज स्टिकीनेस। हम फ्लेम का नेचर है स्टिकीनेस, स्टिकी, राइट? स्वॉलन टंग एंड स्टिकी टंग, right? So I will show you one image. So now we can see various tongues here. आप लोगों की भी जीभें हैं मेरे पास, जो हमने टंग डायग्नोसिस की क्लास में इकट्ठी करी थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, लेकिन अभी आप समझिए। अपनी अपनी जीभ निकालिए जरा बाहर सब लोग। आपकी जीभ तो पतली है। जरा मिरर में देखिए अपनी जीभ, आपकी जीभ कैसी लगती है? आपको पतली लगती है? हाँ, अपनी जीभ भेजिएगा ग्रुप में तो जरा प्यार से देखेंगे उसको, आराम से, थोड़ा सा इनलार्ज करके, है ना? तब मजा आएगा टंग देखने में। सो वी कैन सी द टूथ मार्क ऑन द टंग। व्हाई द टूथ मार्क? अब ये समझिए कि दांतों के निशान क्यों बनते हैं जीभ पर। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे कि अगर एक मिट्टी है, खेत में चले जाओ, खेत में अगर थोड़ा सा पानी भरा हो, खेत में पानी हो, मिट्टी गीली हो, तो जहां भी पैर रखोगे वहां पैरों के निशान बन जाएंगे, बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? इफ यू आर गोइंग इन द फॉर्म, इफ यू आर गोइंग ऑन द लैंड विच इज हैविंग लिटिल वाटर, लाइक अभी आप रेनी सीजन में आप देखते हो ना, कि कहीं मिट्टी में जाते हो तो जहां भी पैर रखते हो वहां ऐसे पैरों के निशान बन जाते हैं। इन द सेम वे, when we are having lots of dampness in the body, so teeth are creating mark on the tongue. हमारी जीभ के ऊपर दांतों के निशान बनते हैं। क्यों बनते हैं? बिकॉज वी आर हैविंग dampness, we are having spleen deficiency, we are having spleen weakness. Okay, so the second thing we have to find out, when we are making the treatment plan for the patient suffering with the paralysis, we have to see whether flame is there or not, इसके शरीर में फ्लेम है कि नहीं, क्योंकि पैरालिटिक पेशेंट इज ऑल्सो हैविंग फ्लेम फॉर्मेशन। सो द पर्सन विल बी हैविंग tongue, swollen tongue. We can see in this first image, swollen. We can see something maybe like this, or maybe like this. We can see this is a swollen tongue. कैसे? मोटी जीभ है। This swollen tongue is the sign of flame. ये swollen tongue flame की निशानी है, मोटी जीभ। We can see this is also swollen tongue. आप इसे देख लीजिए, फिर मैं आपको पतली जीभ दिखाऊंगा। These are the swollen tongue, right? ये मोटी मोटी जीभ है। अब आप देखिए पतली जीभ कैसी होती है। देखिए नॉर्मल जीभ, ये देखिए पतली है, दिस इज अ थिन टंग।
This is normal thin tongue. This is the normal thin tongue. Okay. We can't tell normal, but thin tongue. So if the tongue is swollen, it is a sign of the person is having lots of phlegm deposition. So we have to see the tongue and we'll find out swollen tongue with a sticky coating is the sign of phlegm. Red tongue is the sign of fire. अगर जीभ लाल है तो भाई हो सकता है इसको लिवर फायर बड़ी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो. That is also cause of paralysis. We will be looking some case histories. हम कुछ case histories की बात करेंगे. The person is having high liver fire, high blood pressure, and getting paralytic attack. Right? So red tongue. किसी किसी की जीभ बहुत लाल होती है, किसी की कम लाल होती है. Okay, I will show you the very excessive red tongue, but maybe all the tongue are not that much red. ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे पान खाया हो, है ना? So these tongues are red. This is also coming under the red category. Red tongue, ये सारी लाल जीभ. The red tongue is a sign of excessive heat in the body, है ना? ये हमारे शरीर में ये दर्शाती हैं कि बहुत गर्मी बढ़ी हुई है. So we can find out, okay, whether the wind is high, whether the flame is high, whether the heat is high, and the finally we have to see the fourth thing, that is stasis. कि purple tongue is the sign of stasis. Stasis is the condition that is called highly blocked energy, highly blocked chi. देखिए आप जानते हैं स्टेसिस का मतलब क्या होता है. स्टेसिस का मतलब होता है कि पाइपलाइन का चौक हो जाना. राइट. So we can see the purple tongue, purple reddish tongue. I will show you some purple reddish tongue. आप रेडिश तो जानते हैं, पर्पल कलर कैसा होता है. Let's see this. If you find some tongue like this, we can see this tongue. ये तो कुछ इसने खाया है उसका रंग है, but we can see this is the purple color. We can see this is the purple color. The tongue is having purple color. So that is due to blood stasis. We can see on the side of the tongue, we can see this is the purple color. On the side of the tongue, we can see the purple color here. This is the purple tongue. We can see it. So quickly, I will tell you now, when we are doing the diagnosis of the paralysis patient, we have to consider four things. Number one, wind. So three findings: stiff tongue, moving tongue, deviated tongue. Second is phlegm, swollen tongue, sticky tongue. Number three, fire, red tongue, and number four, blood stasis, purple tongue. तो अब हम कल बात करेंगे इटियोलॉजी की. इटियोलॉजी मतलब क्या कारण होते हैं as per the TCM, right? So we will be discussing the cause who is creating liver, wind, and the paralysis. We will see the cause creating yang deficiency and the paralysis, blood stasis and the paralysis, excessive wind and the paralysis. We will see all the causes one by one, step by step. Okay, then we'll also see the step by step that body will do for thumb, if this is having paralytic effect, body will do for arm, for each and every part also we will be discussing step by step. So let's close the session. Now we'll see on the TTS, Tuesday, Thursday, Saturday, okay, 9 PM. कल तो हमारी EOB की क्लास है, okay, 7:30 बजे. Thank you so much. Let's close the session.